Hello students, this is Rahmat Khan from Shiv Jyoti Educational Group, and today we are going to learn chapter 5 from a book Fundamentals of Physical Geography, that is Minerals and Rocks, one of the beautiful chapter of geography. So let us start. Minerals. What are minerals? Minerals are naturally occurring inorganic substance having an orderly atomic structure and definite chemical composition and physical property. That means every mineral will have a orderly atomic structure. हर एक मिनरल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस. इसी वजह से हर एक मिनरल अलग नजर आता है. अ मिनरल इज अ कंपोज्ड of two or more elements, but sometimes single element mineral like sulfur, copper, silver, gold are found. Next, physical characteristics. When we talk about physical characteristics, I request you to open your book, that is your textbook. Which book you will open, beta? Fundamentals of Physical Geography, chapter 5. Okay, you have to come on page 40. Here there are 10 physical properties of minerals. Okay, that is external crystal form, cleavage, fracture, luster, color, streak, transparency, structure, hardness and specific gravity. We are going to learn this one by one, okay, through a video. So first we are going to talk about external crystal form. When we talk about external form, we are talking about the outer form of the mineral. When we talk about the outer form of mineral, we know that the external shape of crystal is different and internal shape of crystal have definite molecules. उसके अंदर definite molecules होते हैं. इसी की वजह से आपको हर एक मिनरल अलग तरीके का मिलेगा. Fine. So every mineral has a definite compound, उसके अंदर chemical proportions होते हैं. Okay. Next we are talking about cleavage. Okay. All these things are there in your textbook. Okay. For example, I'll read cleavage: tendency to break in given direction, producing relatively plane surface, result of internal arrangement of molecules, may cleave in one or more direction and at any angle to each other. To understand this, we need to see this video. Through this we can understand. As we know, crystals are of different shapes. Okay, as you can see, there are different shapes and these shapes are because of different molecules present in the mineral. हर एक मिनरल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस लेवल पे सेटअप होते हैं और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल की फॉर्म भी अलग आपको नजर आती है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लेवेज, जब हम क्लेवेज की बात कर रहे हैं, ओके, सो एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल, यू कैन सी द ब्रेकडाउन एंड दिस क्रैक इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कमजोर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से एक क्रैक क्रिएट होता है. ओके, यू कैन सी हाउ इट इज ब्रेक. सो दिस इज अबाउट your cleavage. Fracture. Now when we talk about fracture and cleavage, both are similar but there are small differences. Okay, let's find out. पता करते हैं कि क्या differences हैं cleavage और आपके fracture के अंदर. Okay, if you see here fracture in crystalline, if you see fracture will be like this. Okay, you have to see the images and the definitions here. Internal molecular arrangement so complex, there are no planes of molecules, the crystal will break in irregular manner. तो हमें ये पता चलता है कि in fracture the crystal will break in irrelevant manner, कहीं से भी break हो जाएगा. But if we talk about cleavage,
it will be in decent manner, a proper manner, एक जगह से ही, proper जगह से ही, okay? You can see cleavage, okay? Surface is smooth and plain. अगर आप surface देखोगे cleaving का या cleavage का, it will be smooth and plain. But if you see surface of fracture, it will be rough. आप surface अगर देखेंगे तो आपको वो rough नजर आएगा, and that's why there is a crack, and उसी crack की वजह से, उन molecule की वजह से fracture होता है. That is a break comes. Next is luster. When we talk about luster, it's about shine. अगर आपने किसी mineral को देखा होगा, they are shiny. Okay, this is a property of mineral. Luster is shiny. Okay. This is some example. Okay, metallic minerals are always lustrous, मतलब वो हमेशा shiny होंगे, and this is because of the reflection of the light. जो light उस mineral के ऊपर पहुंचती है, पड़ती है, उसके reflection की वजह से ये होता है. Okay. Next is color. When we talk about color, minerals are not of same color. There are different minerals having different color. ऐसा क्यों होता है? Why this is? Okay. Again, this is a part of a science here. Okay, how the eye perceives the color. हमारी आंखें किस तरह से उस कलर को परसीव करती हैं. When the rays fall on the particular object, और जो रिफ्लेक्ट होता है उससे, okay, उसके मॉलिक्यूल का जो कलर होता है अंदर का, तो हमारा जो आंखें हैं वही ऑब्जर्व करता है जो वो मॉलिक्यूलर आपके कलर्स ऑब्जर्व करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कलर, ओके, यू कैन सी द रेज व्हेन इट फॉल्स, ह्यूमन आई ऐसे उसको कैच करता है. दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट कलर, रेड, येलो, ग्रीन, ओके, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इनसाइड द मिनरल. फाइन. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिक. व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रिक, स्ट्रिक की जब हम बात करते हैं, द मिनरल विल बी लुकिंग सेम दिखते हैं, वो दिखने में स्ट्रक्चर उनका सेम होगा बाहर से, बट जब आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दे विल बी डिफरेंट. ओके, वी कैन सी हियर एग्जांपल, वी हैव हेमेटाइट हियर एंड वी हैव ग्लेंका, बोथ लुक ग्रे इन कलर, बट अगर आप देखें दोनों ही ग्रे कलर में दिख रहे हैं, बट इफ यू सी, अगर उसको हम पाउडर फॉर्म में बनाएं तो वन यू कैन सी हेमेटाइट, it is in red color, and the other one, your galena will be in lead color. Fine. So दिखते वो अलग कलर में है, but उनको जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, the color will be different. That is called streak. Okay, उसको हम streak कहते हैं. So this is an example of streak. Next we have transparency. When we talk about transparency, there is one called opaque, जहाँ से transparent है, पूरा रेज आपका आर पार होता है, लाइट आर पार होती है, दैट इज ओपेक. वन इज ट्रांसलूसेंट, जहां पे आपका डाइवर्स होता है, फैलता है. ओके, यू कैन ट्रांसलूसेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट. ओके, ओपेक के अंदर इफ यू सी द लाइट डज नॉट ट्रांसफर्स, आपका लाइट जो है आर पार नहीं जाएगा. फाइन. इन ट्रांसलूसेंट आपका डिफर हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, एंड ट्रांसपेरेंट में इजीली द लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन एरिया टू अदर वन. Okay. Next we have the structure. Structure is the body of the mineral which it consists of. किसके साथ? The shapes of crystals are different. They are different because, why they are different beta? I've already told you, internal molecular structure of mineral is different, and that's why they are different. We have cube, we have tetragonal, okay, prism we have, okay. So these are some examples we have here. Why they are different in structure. Okay. So these are the different structure we have. Hardness. This is one of the best, or one of the best thing we find out about the minerals, कि कौन सा mineral कैसा है. That is their hardness. Okay. There is a chart in your book also, and this scale is there, Mohs hardness scale. Okay. The toughest and the hardest mineral is diamond, and the softest one is the talc. Okay. So we can easily find out which mineral have, what you can see an example. अगर आप यहाँ देखते हैं तो you can see a hard, with the hard mineral we can scratch the softer one. जो hard mineral है उससे आप आराम से soft mineral को scratch कर सकते हैं, because उसके mineral बहुत कमजोर होंगे. And the last one is specific gravity. When we talk about specific gravity, we are talking about weight of the mineral
upon weight of the equal volume of water. That is, when we talk about water, weight of mineral in air minus weight of mineral in water, then you will get this specific gravity. Fine. So these are the physical features of minerals. Okay. Next we have major minerals. Next we are going to talk about the major minerals. When we talk about major minerals, we are talking about feldspar, quartz, pyroxene, amphibole, mica and olivine. Let us study about them one by one. Okay. Feldspar, silicon and oxygen are common elements. Okay. All types of feldspar. तो इस मिनरल के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन कॉमन होते हैं. Next, half of the earth crust is composed of feldspar. Next, it has light cream to pink color. It is used in ceramics and glass making. This is about feldspar. Quartz. Quartz is the most important components of sand and granite. It is hard mineral, insoluble in water. It is white color, used for radio and radars. Pyroxene. Pyroxene forms 10% of earth crust. So 10% of the earth crust किससे बना हुआ है हमारा? Pyroxene से. It is commonly found in meteorites. Meteorites जो आउटर स्पेस से आपके स्टोन्स गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, बहुत रेयर होता है ऐसा. ओके. ग्रीन और ब्लैक इन कलर. सो मेटेराइट्स जो बेसिकली ये जो pyroxene होता है आपका, इधर इट इज इन ग्रीन और ब्लैक कलर. नेक्स्ट, amphibole. Amphibole forms 7% of the earth crust, green or black in color, used in asbestos industry. Asbestos industry, asbestos industry जहाँ पे हीट रेजिस्टेंस का काम करने का होता है, जहाँ हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें बनाई जाती हैं, asbestos industry. Next we have mica. Mica forms 4% of the earth crust. It is commonly found in igneous and metamorphic rocks. तो माइका हमें ज्यादातर किन रॉक्स में ज्यादा मिलता है? It is in igneous and metamorphic rocks. It is used in electrical instruments. It is mostly used in electrical instruments. Olivine. It is used in jewelry. Okay. It is usually a greenish crystal found in basaltic rocks. When we talk about basaltic rocks, they are those rocks which have high pressure on them, okay, and mostly when they are found, they are mostly blackish in color, basalt. Now, we are going to differentiate more minerals, metallic minerals, non-metallic minerals and organic minerals. We have in metallic minerals, precious metals, precious मतलब कीमती, okay, gold, silver, these are precious, जो कीमती होते हैं बहुत ही. Ferrous minerals, which have iron and steel content, वो mineral जिसके अंदर iron content होता है या steel content होता है, that's called ferrous mineral. Next is non-ferrous metals, copper, lead, aluminium. These are some examples of non-ferrous metals or minerals. Let's talk about rocks now. Okay, a rock is an aggregate of one or more mineral. That means एक रॉक के अंदर सिर्फ एक ही मिनरल मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी उसके अंदर मिनरल मौजूद हो सकते हैं. रॉक वेरीड इन स्ट्रक्चर, कलर, साइज, occurrence and origin. So there are different type of rock and their size, shape, color are different. They won't be same everywhere. Okay. Petrology is a science of rocks. The study of rocks is called petrology. Okay. Rocks are grouped under 3 families on the basis of their mode of formation. तो rocks 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किए गए हैं उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के अंडर. लेट्स फाइंड आउट अबाउट दैट. फाइन. Types of rocks we have. The 3 types on the basis of origin are igneous rocks,
sedimentary rocks, and we have metamorphic rocks. Let us understand about them one by one. Fine. First we are going to talk about igneous rocks. When we talk about igneous rock, also called primary rock, okay, the word igneous originates from Latin, which means fire. Why fire here? Okay, because we all know about volcano, and what comes out of it? The magma, and when it comes out it's called lava. जो लावा आपका वोल्केनो से बाहर आता है, and when it cools down, जब वो ठंडा हो जाता है, now that forms the igneous rock. Fine. Igneous rock formed from cooling of molten matter. Which molten matter? कौन सा molten matter? molten मतलब पिघला हुआ, जो गर्म लावा जो molten form में होता है, पिघले हुए फॉर्म में होता है, that is called molten matter, which is comes out, okay, और ऊपर सरफेस पे जब वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, that is called igneous rock. If molten material cooled slowly at great depth, mineral grains may be large. Sudden cooling at the surface results in small and smooth grains. Example: basalt, granite, and gabbro. These are the example of igneous rock. Remember one thing. Sometimes this lava, this magma settles down inside only. कभी ये बाहर नहीं आता है, अंदर ही आपके मेंटल में स्टोर हो जाता है, क्रस्ट में फंस जाता है, वहीं रुक जाता है. So that is also called igneous rock. वहां पे भी वो igneous rock कहलाएगा. बहुत बार क्या होता है, when we go for mining, तो आपको basalt rock मिलता है, and this is because of that magma, that lava settles inside only, cools down inside only. तो बच्चों मैंने क्या बोला आपको? One thing is that sometimes the lava comes out, वो जो मैग्मा है बाहर आता है लावा, and cools down on the surface, बाहर आके ठंडा होता है, that is also called igneous rock, and sometimes it settles inside only, okay, so that is also a part of igneous rock. Okay, this is an example. Sedimentary rocks. Sedimentary are sediments, particles. The word sedimentary derive from Latin word that is sedimentum, means settling, settle होना. Okay, if you put some sand, कुछ रेत लेकर अगर आप बाल्टी में डालोगे, तो that sand will settle at the bottom. क्या हो जाएगा? रेत जाकर आपकी बाल्टी में नीचे सेटल हो जाएगा. ऐसे अगर आप फिर दोबारा डालोगे तो वो उसके ऊपर जाके सेटल हो जाएगा, फिर अगर आप दोबारा डालोगे तो वो उसके ऊपर सेटल हो जाएगा, and it will form layers. Okay, sedimentary, sediments, okay, which settles down. Fine. So rock fragments are transported by different agencies and deposits through composition turn into rocks. This process is called lithification. Okay, जो आपके नेचुरल चीजें हैं, कभी हवा हो गई, कभी बारिश हो गया, तो आपकी धूल को, मिट्टी को बहा ले जाती है और सेटल करती है और लेयर्स में तब्दील करती है. फाइन. Sedimentary rocks are classified into three. One is mechanically formed, examples sandstone, limestone. Organically formed, example chalk, coal. Okay, when I talk about organic formation, we are talking about the organic matter. Okay, आपके फॉसिल जो हैं, आपके जानवर हो गए, पेड़ हो गए, जब दब जाते हैं, millions of years is take to form the fossil fuels. Okay, कोल वगैरह में तब्दील हो जाते हैं, organic matter. Chemically formed, example potash and halite. Okay, these are example of chemically formed. Okay, sedimentary rocks, you can see the lines, sediments कैसे settle हो रहे हैं. You can see these lines are the sediments कैसे settle हुए हैं. You can see these lines can show us how it settled down one by one, layer by layer. Next is metamorphic rock. The word metamorphism means change of form. Metamorphic rock is change of form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना. Okay? Metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of materials within original rocks due to the action of pressure, volume and temperature. तो क्या हो रहा है बच्चों? हम देख सकते हैं जो पत्थर है वो प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, एंड दैट आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. जिस पत्थर पर, जिस स्टोन पर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा हीट होगा,
it will be that harder, okay, and it will change its form. Example, marble, slate and schist are the example of metamorphic rock. We have dynamic metamorphism, that is reorganization of the original mineral within rocks due to the breaking and crushing without any chemical change. बिना chemical change के जो change हो रहे हैं, अपने form बदल रहे हैं, that is dynamic metamorphism. And next one we have thermal metamorphism. When we talk about thermal metamorphism, the materials of rocks chemically alter and recrystalline, okay, that is contact metamorphism. And we have one more, regional metamorphism. When we talk about contact metamorphism, the rocks come in contact with hot intruding magma. तो जो पत्थर है किसके कांटेक्ट में आ रहा है? मैग्मा के. मैग्मा is that which comes out from the volcano, जो लावा कहते हैं हम बाहर आने के बाद. Fine. So under high temperature, new materials added to the rocks. So these are some examples. Okay. Contact metamorphism. Contact इसलिए बोला गया क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? मैग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है. तो हीट के कांटेक्ट में आने की वजह से it will change its form. Okay. Regional metamorphism. When we talk about regional metamorphism, rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure of both. We all know about tectonic plates. Tectonic plates जब एक दूसरे से टकराते हैं and because of that some plates go undergo. कुछ प्लेट्स जो हैं नीचे चले जाते हैं, क्रश कर देते हैं स्टोन्स को, और जब पत्थर अंदर चले जाते हैं धरती के अंदर, तो इसके वजह से, इस प्रेशर की वजह से भी आपके रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएट होते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, इन सम रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइन्स. सच अरेंजमेंट्स ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड लिनेशन और फोलेशन. तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? लिनेशन और फोलेशन. ओके. समटाइम्स मिनरल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू अल्टरिंग थिन एंड थिक लेयर्स. कभी कभार अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग लेयर्स में सेटअप हो जाते हैं. ओके. एंड appearing in light and dark shades, such structure is called banding. और ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहेंगे? बैंडिंग कहेंगे. फाइन. Rock cycle. When we talk about rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into new ones. तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि हमने सीखा कि जो पुराने पत्थर हैं they always keep on changing their forms. मतलब कई सालों बाद उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाएगी because of the natural process. Okay? Rocks do not remain in their original form. Rocks जो हैं अपने original form में नहीं रहेंगे for long, but may undergo transformation because of the natural or other process. It will go into change. वो बदलते रहेंगे. Okay? So this is the rock cycle, and this figure is already there in your textbook. Okay? That is on page number 43. This is very important image beta, okay, where you can see the rock cycle, figure 5.1. This is very important. And apart from that, we have to mark the physical characters in textbook, which I have already told you. That is on your page number 40. There are 10 physical features we have learned. Okay, we have to mark all this, and all those things which are in the block, okay, which are very important, you have to mark that also. So this is the end of the chapter, and if you don't understand anything, please rewind the video, watch it again, and please go through the textbook. While I was teaching, I was using the same. Okay, you will easily understand the chapter. It's a very short chapter. Take care of yourself, study nicely. Thank you very much. God bless you.